Right, so let's start for today, okay? Please concentrate. ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, these are very high probable topics, जिसमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. Okay, repeated, there might be repeated questions, there might be questions on similar topics, but still I believe कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको लिखा हुआ, that would be more than sufficient for you to attempt the questions which are asked from management. Okay, so don't try haphazardly here and there to read topics of management. Systematic study is very important for your DGMS exam. I know that you all people are working and you all get very less time to study. That is why it becomes even more important to read the topics in a concise and succinct manner. Because if you go to read the complete syllabus and then each and every topic, then cost benefit analysis will be very less. उस केस में क्या होगा कि आप पढ़ तो बहुत लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चंस बहुत कम आए तो बाकी के टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ पाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज व्हाई you always try to read the content in a concise manner. Keywords, जो important lines है, important questions है, उन सारे questions को अगर आप 5 बार रिवाइज करके जाइए, that is more better than reading every topic in depth and lot of things. मतलब एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ने के बजाय जो आप एक चीज पढ़िए, उसी को 5 बार रिवाइज कीजिए, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़िए, तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा एज कंपेयर टू कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को खोला और आपने 100 पेज के नोट्स खोल लिए और 100 पेज के नोट्स को पढ़े जा रहे हैं. दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू. ओके, और वही मेरा प्राइम फोकस भी है इन सारे वीडियोस को लेकर के. ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वर्किंग और मैनेजमेंट के क्लासेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऑलरेडी लाइव है, 1 सितंबर से चल रहे हैं. 5 तारीख तक अर्ली वर्ड ऑफर है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ज्यादा अमाउंट नहीं है, मैटर नहीं करता. मैटर करता है आपका एग्जाम में पास होना. एक अटेम्प्ट के बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट दीजिए. इससे बढ़िया है कि आप वन शॉट एंड परफेक्ट शॉट. इसके ऊपर मेरी सिंपल फिलॉसफी तो यही होती है, किसी भी चीजों को अगर आपको करना हो, कोई भी काम हो, तो आप ट्राई कीजिए कि फर्स्ट शॉट में हो जाए. क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स होते हैं ना, वहां पे आपकी एनर्जी कम होती जाती है, आपके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भर जाते हैं. तो इसलिए मेरा हमेशा यही मानना है कि जो भी काम कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट तक आपको फाइनल कंप्लीट करके फिनिश कर देना है. दैट इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटजी. ऑलराइट, so let's start with today's topic. This is part 2. You must be knowing part 1 we discussed yesterday, and we have shared the PPT in PDF format also. Today I'll share a link of WhatsApp group. जो लोग भी ऑनलाइन मैन एग्जाम के ऑलरेडी ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी नोट्स मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में. आप क्विज के क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पे लगातार होता रहता है. तो ये जो पार्टिकुलर ग्रुप का मैं लिंक शेयर करूंगा, इस लिंक को सिर्फ और सिर्फ वही लोग ज्वाइन कीजिए जो ऑलरेडी किसी ग्रुप में नहीं. आवाज आ रही है सबको? फिर से प्लीज रिप्लाई वंस, यस और नो. यस, ओके, थैंक यू सोम, थैंक यू. Okay, then who has written this class no start, when start class? Okay, we have already started. All right, so let's come for first topic for today. The topic is delegation of authority. अब यहाँ पे आपके पास 2 कीवर्ड्स है जो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा. There are 2 कीवर्ड्स. क्या है वो कीवर्ड? पहला कीवर्ड है आपका डेलीगेशन और दूसरा कीवर्ड है आपका अथॉरिटी. ठीक है, तो हमारा पूरा डिस्कशन जो होगा फॉर दिस टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन दीज 2 कीवर्ड्स ऑफ डेलीगेशन एंड अथॉरिटी. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. Delegation of authority means, what does delegation of authority implies? Transfer of authority from level of supervisor to the level of subordinate. डेलीगेशन मतलब, आप ऐसे सिंपल सा, पहले आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ. डेलीगेशन करने का मतलब है कि आपको कोई काम मिला,
अब फॉर एग्जांपल आप मानो कि मैनेजर को एक पर्टिकुलर काम आप समझो इस तरह से मिला हुआ है कि पूरे माइंस का मैनेजमेंट करना है, उसको माइंस एक्ट में ये दिखाया हुआ है। तो आप ये बताइए, क्या पूरा माइंस का मैनेजमेंट हर काम वो खुद करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी कितना काम कर सकता है, जबकि बहुत सारे माइंस के अंदर काम होते हैं। दैट इज वाई मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑलवेज ट्राई टू delegate their authority, delegate their responsibility to lower level. लोअर लेवल इन द सेंस कि उनके बराबर के भी हो सकते हैं या उनके अंदर भी हो सकते हैं। जैसे मैनेजर ने वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, मैनेजर ने ब्लास्टिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर दिया, और इस तरीके से सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजर इज डेलीगेटिंग द अथॉरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ माइंस टू सेफ्टी ऑफिसर, रिगार्डिंग वेंटिलेशन टू वेंटिलेशन ऑफिसर, एंड ऑल दोज पॉइंट्स। ओके, so delegation of authority means transfer of authority from one level of supervisor to the level of subordinates, or delegation is the downward transfer of authority from manager to subordinate. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ना, डाउनवर्ड। मतलब डेलीगेशन जो हो रहा है वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रहा है। मतलब कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो होगा वो जनरल मैनेजर को बोलेगा, जनरल मैनेजर जो है वो मैनेजर को बोलेगा या एजेंट को बोलेगा, एजेंट मैनेजर को देगा, और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, इस तरह के लोगों को अपना अथॉरिटी को क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा। ऑलराइट, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। Clear? It is important as the supervisor in an organization is not able to manage all the work by himself. मैंने आपको खुद बता दिया कि मैनेजर चाह करके भी सारा काम खुद से नहीं कर सकता, that is not possible for him. It helps the manager to focus on more important functions of the organization that needs to be taken care of on priority. अब आप ये बताओ कि manager has delegated its authority of safety of mines to safety officer. So how does this helps manager? क्योंकि मैनेजर के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मैनेजर ने अगर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर क्या कर सकता है, he can focus upon more important functions, right? Now delegation, this point is important. Delegation consists of three main elements. What are those? Number one is authority, number two is responsibility, number three is accountability. इन तीनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आराम से अभी बात करेंगे, बट ये आपको जानना चाहिए कि डेलीगेशन में ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि आपका इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, ओके, दिस इज सिंपल फिगर, यू कैन सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, सो फ्रॉम टॉप लेवल इट गोज टू द बॉटम लेवल। ओके, सो डेलीगेशन मीन्स, हमेशा हिंदी में अगर आप याद करना चाहे, डेलीगेशन मतलब एक लेवल ऑफ अथॉरिटी जो ऊपर है वो नीचे लेवल ऑफ अथॉरिटी को अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और ये हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। क्लियर? दिस इज अगेन वेरी सिंपल thing which I have already shown in the previous slide. Delegation of authority have 3 points: authority, responsibility, and accountability. And of course, now this is the question which have been asked in DGMS exam. So I request all of you to please answer the question. Read it very carefully and then answer. This question has already been asked in DGMS exam. Which of the following are elements of delegation? Responsibility, accountability, authority, accountability, responsibility, authority, accountability, responsibility, informal organization. Great to see a lot of people. And who has answered F? Binay Bhushan? There is no F. Okay, so all of you are answering D, and that is absolutely the right answer. Well done, very good. Excellent. So of course answer is D, right? Easy question. I am discussing some important points here regarding that topic only. Okay, no, this is the next topic, and topic is responsibility. All right, so delegation of authority हमने पढ़ा अभी, delegation of authority से ही related topic है आपका,
रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी डीजीएमएस एग्जाम में पूछे गए हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट विद अ सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी. मैंने आपको बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस असाइनिंग द वर्क टू एन इंडिविजुअल. ओके, अभी मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरल मैनेजर. जनरल मैनेजर delegates the authority to agent delegates the authority to mines manager, and then mines manager delegates the authority to safety officer, ventilation officer, blasting officer, etc. So what has been what has happened in the whole process? In the whole process, lower level of people are getting more responsibility to perform the task. Suppose blasting goes wrong, blasting is not carried out in a proper manner. Who will be responsible? Who will be primarily responsible for this thing? If blasting is not done in a proper manner, blasting officer will be responsible. Okay, so what manager did? Manager delegated the authority of doing blasting to blasting officer, but now it is the responsibility of blasting officer to conduct blasting in a proper manner such that adjoining structures are not damaged. Okay, so responsibility means assigning the work to an individual. The manager assigns certain responsibility to subordinates for the completion of certain tasks on his behalf. Very simple line. Responsibility 4 can be delegated, but responsibility 2, which is also known as ultimate responsibility, cannot be delegated. Okay, cannot be delegated. Thus, responsibility flows upwards. This is most important line, and this is the basic difference between responsibility and authority. What you have seen in the authority, it was flowing downwards, but responsibility flows upward. Very important line, and obviously question can be asked directly. These are very, very important keywords. In fact, I am using only important keywords. Responsibility is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. I already told you the example of blasting officer. When a superior assign a job to its subordinate, it becomes the responsibility of the subordinate to complete that job. Okay, so in simple words, I've already told you that authority means manager has got the authority from general manager. General manager got the authority from director, but now blasting officer has got responsibility to conduct the blasting process. Okay, this is very simple image which depicts the whole process of responsibility. What you can see, some person is giving keys to another person. So this simply highlights that one person is giving responsibility of very important task to its supervisor, to its subordinates, etc. Okay, so this is the figure which is depicting the concept of responsibility. Now, this is the question which have been asked in the DGMS exam. Responsibility and options are cannot be entirely delegated. The state or fact of being accountable means obligation to perform an assigned task, flow upward from subordinate to superior, and all the options. I'll give you one trick here also. Okay, lots of people are attempting, and most of the people are answering D. Some have also answered E. Let's see the answer. Answer is E. Okay. Now there is one trick to solve the MCQ questions. Okay. Listen it very carefully. It applies only to the questions from management. If you see the options of all of these or all of the options, then please tick. If you don't know the topic, then tick the answer as what? All of the options. हिंदी में बताता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मैनेजमेंट का है जिसमें 5-6 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज है, तो आप ऑल ऑफ दीज टिक कर दो, 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बट दिस अप्लाइज ओनली टू मैनेजमेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2, व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज टिक करना है, but this is very important trick to solve the MCQ. In fact,
अगर आपके क्वेश्चन में 150, अगर आपके पेपर में 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, if you are having 150 questions in the whole paper, suppose 20 questions are having all of these, even if you take all of these in all those 20 questions, at least more than 10 questions will be right. So if more than 10 questions are right, you will get, for 10 questions you will get 20 marks, for 10 wrong answers you will get -5 marks. So how much marks you will get? 15 positive. Okay, so this is the trick कि अगर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो आप ऑल ऑफ दीज टिक कर देना, बहुत हाई चांसेस होगा कि वो सही हो। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर देयर आर 3 important topic: authority, responsibility and accountability. I have already told you regarding authority, I have already told you regarding responsibility. There is one term called accountability. Accountability means the person, you have simply heard the word accountable. You are accountable for this one. Okay, so accountability means taking the answerability of any task which have been assigned. Okay, I will be answerable. If something goes wrong, I will be answerable to my bosses, to my superiors. So that is accountability. Okay, what is the meaning? It means authority. The meaning of authority, it means right to command. It is the obligation to perform an assigned task. It means the answerability. Okay, this word is important. Accountability means answerability. Answerability for any important task. You can read the whole slide. This slide is very, very important, because questions have been asked on authority, questions have been asked on responsibility, but accountability till now no question have been asked. It is very likely that questions on accountability can be asked like that. Okay, so you can read this slide. This is very important slide, and of course this will help you. So the next topic is PERT and CPM. Yes, lot of people are having confusion regarding PERT and CPM. Try करूंगा कि आज आपको मैं PERT and CPM सबसे सिंपल वर्ड्स में समझा के चला दूं. Alright. So what is PERT and CPM? Number 1, it is related to project management. What does it mean? इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. Suppose if you want to open a mine, आप चाहते हैं कि आप एक माइन को ओपन करना है आपको. अब now you already know that to open a mine there are a lot of tasks which need to perform. First of all, planning is there, then box cut, then preparation of haul road, purchasing of machinery, hiring of manpower, and all those things are involved in any project. ठीक है, तो अब ये बताओ कि मैंने सोचा कि मुझे एक माइंस ओपन करनी है, और सबसे पहले मैंने क्या किया ना, 10 डंपर खरीद लिए. ओके, I just thought of opening a mine and then I purchased 10 dumpers. First task I did, I purchased 10 dumpers. Now tell me, was that a right strategy? No. Why? क्योंकि जब तक आपके हॉल रोड नहीं बनेंगे, जब तक आपका मैन पावर आप हायर नहीं करोगे, तब तक तो डंपर को क्या करोगे आप डंप यार्ड में लगा के रखे रहोगे. That is simply wastage of money. That is simply reducing the efficiency of that machine. Okay, so project management, ये जो भी हम दो टॉपिक की बात कर रहे हैं, PERT and CPM, these two topics relates to the strategies which are used while opening a project. अब अगर मैंने प्रोजेक्ट में मुझे पूरी माइंस ओपन करनी है, तो मेरा डिसाइड हो गया, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद बॉक्स कट, उसके बाद हॉल रोड बनाएंगे, उसके बाद आपका डिफरेंट टास्क, मशीनरी परचेज करेंगे, मैन पावर हायर करेंगे. तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गया जो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना है, लगाना है. इन सारी चीजों को पढ़ने, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अगर आप काम को सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो आपके रिसोर्सेस वेस्ट जाएंगे. सबसे पहले आपने क्या किया कि 50 लोगों को हायर कर लिया माइनिंग करने के लिए, आपकी माइंस कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो 50 लोगों को बैठ के सैलरी दो. आपने 20 डंपर खरीद लिया, डंपर का कोई काम है नहीं, हॉल रोड बनानी है, डंपर डंप यार्ड में लगा हुआ है, उसके ऊपर जो आपने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो. तो दीज आर ऑल वेस्टेज ऑफ एफर्ट. तो इसलिए ये जो दो स्ट्रेटजी है, पर्ट और सीपीएम, ये डिसाइड करती है कि कौन सा टास्क कब कंप्लीट होगा और उसके बाद हमें कौन से टास्क को करना. क्लियर? अब इसमें दो चीजें आती है कि अगर मान लो आपने क्या किया, माइंस ओपन करना है आपको, आपने डिसाइड हो गया कि एक बार बॉक्स कट हो जाएगा, उसके पहले छोटा सा हॉल रोड बना, बॉक्स कट कर देंगे, उसके बाद बड़ा हॉल रोड बनाएंगे, तब डंपर परचेज करेंगे.
So there are two different type of tasks. One task which is sure sort, that will be completed in next 7 days, and one task which is probabilistic कि हाँ ये टास्क हो सकता है 7 से 10 दिन के अंदर खत्म या 7 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाए. So there are two different tasks in any projects are involved. One task which is certain in terms of its deadline, one task which are probable in terms of its deadline. कि एक टास्क 7 दिन में कंप्लीट होना ही होना है, एक टास्क है जो 7, 10, 15, 20 दिन तक खत्म हो सकता है. तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए, एक टास्क जिसमें कि हर टास्क जो है वो पूरा का पूरा श्योर शॉर्ट होता है, और एक प्रोजेक्ट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड पे होता है कि ये कंप्लीट. अब ये बताओ कि अभी मैंने क्या बोला आपको कि हॉल रोड आपका कंप्लीट होगा तो आप डंपर परचेज उसके थोड़े दिन पहले कर लोगे. अब मान लो हॉल रोड के लिए आप सर्टेन ही नहीं हो. हॉल रोड हो सकता है 3 महीने में हो सकता है 6 महीने में हो सकता है 12 महीने में हो. इस तरीके के अनसर्टिनिटी बने हुए हैं. तो दो तरह के टास्क हो गए ना, एक टास्क जो कि श्योर शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, एक टास्क जो कि श्योर शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. इन दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पर्ट और सीपीएम. क्लियर? सबसे पहले पर्ट और सीपीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है. उसमें दो तरह के टास्क होते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड पे, दूसरा आपका डिटरमिनिस्टिक मेथड पे, मतलब जिसमें फाइनल डेट फिक्स है या फाइनल डेट फिक्स नहीं है. और उन दो कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है. नंबर वन इज पर्ट, अनदर वन इज सीपीएम. ऑलराइट, so I have written here deterministic means known, means deadline is known. The stochastic means deadline is probable. PERT, the full form of PERT is project evaluation and review technique. CPM is critical part method. PERT is a project management technique. I have already told you that is all related to project management. That is applicable when the time required to finish a project is not certain. So PERT को अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो PERT is not certain. Okay, always remember this. PERT is event oriented. PERT is a probabilistic method. That is, it takes into account uncertainties involved in the estimation of time of a job or an activity. तो तीन चार चीजें PERT के लिए इंपॉर्टेंट हो गई. इसका फुल फॉर्म नंबर 1, नंबर 2, it is an event oriented technique, and number 3, it includes probabilistic method. These are 3 keywords for PERT. Okay, some कल कोई पूछ रहे थे ना कि कीवर्ड क्या होता है, तो इस तरह की चीजें कीवर्ड है कि अगर आपको PERT चाहिए, PERT का फुल फॉर्म हो गया, PERT जो है इवेंट ओरिएंटेड है और PERT जो है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है. नाउ सीपीएम के ऊपर आ जाइए. सीपीएम इज अ statistical algorithm which has a certain start and end time. Okay, PERT में क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड था, यहाँ पे सर्टेन है. CPM is an activity oriented, that was event oriented. CPM is activity oriented. CPM network is built on basis of activities, hence CPM is deterministic model. इसका मतलब जैसे PERT में किया था वैसे ही CPM में critical path method इसका फुल फॉर्म हो गया. सर्टेन नहीं होता, सर्टेन डेट एंड टाइम होता है दूसरा, और ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल होता है. दैट इज इट डज टेक्स इनटू अकाउंट द uncertainties involved in estimation of time for execution of an activity. PERT and CPM are project management technique, already told you. All right, you can read this the same thing which I have already told you. It is written here. You can read this PowerPoint anytime. So now attempt the question. This is question number 13. I hope you have understood the concept of PERT and CPM. Easy concept. अगर आप अपने लैंग्वेज में कीवर्ड्स को याद करते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप 3 महीने क्या 3 साल में भी टॉपिक को नहीं भूलते. ओके, PERT एंड CPM का आप जवाब दीजिए. It is good that a lot of people are answering. I hope today you understood the topic regarding PERT and CPM. So PERT and CPM is associated with project management technique. One is stochastic, means probabilistic. Second one is deterministic, means end time is known. One is activity oriented, another one is event oriented. All right, so a lot of you people have attempted it, and most of you people have answered it correctly. The answer is C. This is previous year question of DGMS.
and see this question have been answered by you all, almost all of you. All right, so come to the next topic, which one is human resource department, HRD. Okay, HRD is a part and parcel of almost every organization. So you must be familiar with this word, human resource development. So human resource is the division of business. It is responsible for, अब सिंपल सी चीज है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. नाउ ए होल lengthy process is involved in managing the human resource, starting from the recruitment, then day-to-day activities, like there are a lot of things, salary is involved, then of course salary है, different kind of perquisites है. तो ये सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो that is called personal management. Okay, and in that personal management one topic is HRD, human resource department. The main functions of 6 main functions of HR are recruitment, किसी आदमी को, नया आदमी, किसी भी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, workplace safety and culture, employee relations, compensation planning, labor laws compliance and training. Okay, so these all are 6 different functions of HR. You can see here, human resource means finding the potential of one person, employees are there, improving the skill of the person, that is why training are conducted under MBTR, then research is there, training is there, recruiting is there, performance is there, leadership is there. So all those things are related to HRD. Now this is a question which have been asked in DGMS exam. Please attempt this question. People who work in a human resource department should have knowledge of IT means information technology, but DGMS written is IT, finance, marketing, organizational behavior, and all the options. Great to see a lot of people are answering. I hope you must be understanding the topic also. Okay, so this is very easy question. The answer is D, organizational behavior. Correct. अब इसमें से ऑफ कोर्स आप कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें ई ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैंने पहले ही बताया था आपको 20 अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पूरे के पूरे थोड़ी सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो उसमें आप मान लीजिए कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत वाला ऑप्शन था, क्योंकि 20 में आपने 10 सही किया था तो आपके 10 नंबर आए थे, और अगर आपने मान लो कि 5 गलत किया था तो आपके 5 नंबर, 10 गलत किया था तो 5 नंबर कट गए थे, ओवरऑल आप पॉजिटिव में थे. ओके, 14 नंबर का आंसर डी है. इसमें क्या है कि आईटी, अब यार देखो क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि जो लोग एचआरडी में काम करते हैं उनको एग्जैक्ट क्या क्या आना चाहिए. अब ये बताओ कि उनको मार्केटिंग जानने की क्या जरूरत है. मार्केटिंग हर कंपनी के लिए मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट होता है. उनको फाइनेंस चलो थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, बट इंट्रिकेसीज ऑफ फाइनेंस जानने की क्या जरूरत है. आईटी सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है उस कंपनी का, कैसे डेवलप हो रहा है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है. जो लोग एचआरडी में, उनका असली काम व्हाट शुड बी दे एक्सपर्ट एट, दे मस्ट बी एक्सपर्ट in hiring the people, giving training to the people, and all those aspects. Okay, so that is included in organizational behavior. Correct. Come to the next topic, and next topic is personal management, because HRD and personal management are both interrelated. That is why I have kept this topic here. Personal management is the strategic approach for what, to effective and efficient management of people in a company or organization such that they help their business gain a competitive advantage. Okay, so this is, I have bifurcated a single line in 4 small points. Personal management is the strategic approach to the effective and efficient management of people in a company or organization such that they help their business gain a competitive advantage, and it is designed to maximize employee performance in service of an employer's strategic objective. Personal management, simple से language में अगर मैं आपको बताऊं, in almost all the company there is one personal department. Okay, you must be very aware of that. So personal management करने का मतलब है कि जितने सारे लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका डे टू डे मैनेजमेंट करना है. उनकी सैलरी टाइम पे जाए, किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो उनको वार्निंग मिले, कोई गलत तरीके से ना फंस जाए, अगर किसी को छुट्टी लेनी है अल्टीमेटली पर्सनल डिपार्टमेंट में जाएगा. तो इस तरह के फंक्शंस
which are associated with those people who are already working in the organization is called personal management. And for that, in almost every company, there is one personal department. All right. Right. Someone has asked personal and HR is same. I have already anticipated that question. मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये क्वेश्चन जरूर आप पूछेंगे. Now you see this figure. तब आपको ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. Is personal management and HR same or different? Can you see the figure and can you simply deduce the differences? Human resource management, इसमें फिगर में क्या है? All these three interviewers are taking the interview of this person. Okay, so this is human resource management. Means ये सबसे स्टार्टिंग में, कंपनी के स्टार्टिंग में हायरिंग को लेकर के, फायरिंग को लेकर के, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दिस वन. Whereas personal management, see, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आदमी हायरिंग वायरिंग नहीं चल रही है. यहाँ पे क्या है? All those persons who are already working in the company, उनको मैनेज किया जा रहा है. So this is the thin line difference between personal management and human resource management. I think I am clear. I'm clear about the differences between human resource management and personal management. That is why I told you that personal management is associated with people who are already working in the organization, and then human resource management is mostly associated with the process where new people are hired. ठीक है, तो एक शुरुआत का प्रोसेस हो गया जहां पे नए लोगों को ले रहे हैं, और एक प्रोसेस वैसा हो गया जहां पे ऑलरेडी सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका मैनेजमेंट करना है. तो ऑफ कोर्स पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंसेस है. That difference is very thin, but from this figure you can understand what is the difference between these two points. Okay, robber cards, why I've used, because DGMS has asked this typical question in the paper. Robber cards identified three types of skills of manager. Okay, what are those three types of skills of manager? Technical skill, conceptual skill, and human या interpersonal management skill. For personal management, technical skill includes सेंसिबिलिटी एंड एप्टीट्यूड. आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो ऑफ कोर्स डीजीएमएस ने पूछा है. ठीक है, इस फिगर को भी आप देख सकते हो. आप 1-2-4 बार, छोटा सा देखो डायग्राम होता है. अगर आपने सिर्फ यू जस्ट सिंपली सेव द इमेज एंड दिन में आपने एक बार 2 बार ऐसे ऐसे करके, मान लो मैनेजमेंट के ऊपर, इफ यू हैव सम 30-40 इमेजेस, when you are traveling, when you get time, 5-10 minutes time, तो आप एक बार go through कर लेंगे अपने मोबाइल में, then you will have acquaintance of all these topics. Okay, so this is the question which have been asked in the exam. Personal management must be a person who must have the following skill: human relation skill, sensibility, conceptual skill. None of the options. Option A, B, and C. All right, most of you people are answering, and you have answered E. And in fact, very good, very good, very good. I literally feel happy when you people answer, and in fact that gives me a lot of happiness. So answer is E. Now answer is E, right? Most, and you people have answered it E only. तो अब बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द ऑप्शंस होगा. तो आपको अगर ऑल ऑफ द ऑप्शंस है तो आपको टिक करना चाहिए. We have attempted 3 questions here. All those questions have been asked by DGMS only. And for now, what is the score? The score is 2-1. 2 क्वेश्चन में all of the options सही था, 1 क्वेश्चन में गलत था. तो अभी भी आप पॉजिटिव में आना. ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क स्टडी. वर्क स्टडी हमने कल ही डिस्कस किया था, वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी के बारे में. तो फिर से क्वेश्चन एक था, तो आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन इट ऑल्सो. Work study, it consists of 2 techniques named method study and work measurement. I have already told you. The method study, the technique to simplify. अगर आप याद कीजिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी कल मैंने क्या पढ़ाया था याद होगा कि हमने जब वर्क स्टडी के बारे में बात करी थी तो क्या बात करी थी? 2 चीजों के बारे में बात करी थी. एक तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, और दूसरी चीज किस एग्जैक्ट टाइम के अंदर देना है. याद होगा, कल हिंदी में हमने बात करी थी, अंग्रेजी में कीवर्ड को आपको याद कराया था. द सेम थिंग इज रिपीटिंग हियर. Okay, so it consists of 2 techniques namely method study and work measurement. The method study is technique to simplify the job and develop more economical method of doing it. The work measurement is concerned with elimination of ineffective time. Of course, जो फालतू के टाइम है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको हटा देना है. And establishment of time standards.
टाइम स्टैंडर्ड्स फॉर ए जॉब। टाइम स्टैंडर्ड्स फॉर ए जॉब करने का मतलब क्या है कि हर काम कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से पार्टिकुलर काम के लिए कितने लोगों को अपॉइंट करना है, किस तरह के लोगों को अपॉइंट करना है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें आपको पता होगा। तो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या मैन पावर मैनेजमेंट में आप बहुत ही इफेक्टिव मैनेजर साबित होंगे। ओके, तो वर्क स्टडी के बारे में हमने कल पढ़ा था, और डेफिनेटली जो कीवर्ड मैंने बताए थे आपको अभी भी याद होगा। ओके, सो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ टू मेथड्स, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ओके, मेथड स्टडी को हम मोशन स्टडी बोलते हैं, वर्क मेजरमेंट को हम टाइम स्टडी बोलते हैं, एंड ऑल दीज टू लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ टेल मी द आंसर। Work study consists of effective use of human effort, evaluation of human work, effective use of guiding equipment, options A, B, and C, and none of the options. Attempt it. Great. A lot of people are answering, and most of you are answering D. So I should move ahead. Now see, what is the answer? D. So what is the score now? It is 3-1. Okay, the question is, of course, this has been asked by DGMS only. मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन जो DGMS ने पूछ चुके हैं वही क्वेश्चंस को we are revising here. Option is again D, all of these. So for now, out of 4 questions, all of these have options is correct in 3 questions. In 1 question it was wrong. So the score is 3-1. So this is very effective technique, you know, in questions which are having all of these as options. Next topic number 17 is net working capital. You must be remember, you might be aware what I have told you yesterday regarding capital. याद है? थोड़े फोटोज याद आ रहे हैं? कैपिटल के अंदर क्या था? कैपिटल के अंदर मशीनरी थी, इनटेंजिबल और टेंजिबल, दो तरह की चीजें थी। टेंजिबल में मशीनरी थी या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी बिल्डिंग था और जो भी हो सकता है। इनटेंजिबल में आपको याद होगा वर्ड लिखा हुआ था पेटेंट, वर्ड लिखा हुआ था सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें इनटेंजिबल है, मतलब जिसको टच नहीं कर सकते। और टेंजिबल चीजें में हमने देखा था कि हाँ मशीनरी है, टच कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग है, टच कर सकते हैं। सो कैपिटल के बारे में आपको क्लियर कट आइडिया I have already told you regarding capital yesterday only. ठीक है? So now this is net working capital. Okay, एक छोटी सी स्टोरी आपको और बताता हूँ। कैपिटल का मतलब आप समझ गए? You already know what is capital now. अब क्या हर कैपिटल कंपनी के अंदर जो होता है वो कंपनी अपने पैसे से खरीदती है? All the capital which are already available in the company, what do you say? All these capitals are owned by company themselves from their own money? No. Company borrows, company takes loan, company take loan from banks, company can take loan from people, company can take loan from different individuals. कैसे? Different individual या different institution से लोन कैसे लेते हैं? तो company issues equities, company issues debentures, and company issues there are a lot of instruments. ठीक है, पैसे जिसको हम बोलते हैं ना मार्केट से पैसा लेना है, तो मार्केट से पैसे लेती है कंपनी। सारे जो कैपिटल होते हैं कंपनी के खुद के नहीं होते हैं, कुछ दूसरों के पैसे को यूज करती है, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने पैसे यूज करते हैं, और इस तरीके से कंपनी के अंदर कैपिटल को प्रोड्यूस किया जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस, नेट वर्किंग कैपिटल द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये जो मैंने बताया ना आपको, अब किसी से आपने पैसे लिए, मान लो कि आपने 1 लाख रुपया किसी से लोन लिया, so that is your asset or liability? That is your liability. Okay, liability क्यों है? क्योंकि वो 1 लाख रुपया आपको किसी को वापस करना है। Okay, so my question was, if you borrowed say a loan of 1 lakh rupees, was that your asset or liability? So that was your liability. Now there is one more question. Suppose you bought one car from that 1 lakh rupees, is that your capital? Yes, that is my capital. Okay, so capital मैंने पहले ही बताया ना, capital can be purchased आपके खुद के मनी से या आपने कहीं से बोरो किया। जो आप बोरो करते हैं that is called liability, और जो आपके खुद के पैसे हैं that is called asset. So net working capital is the difference between current asset and current liability. मतलब कि मेरे पास टोटल 100 रुपए है, 50 रुपए मुझे किसी को वापस करने हैं। So what is my net working capital? Just 50 rupees. Okay,
Why? Because I have total 100 rupees. Out of that 100 rupees, I have borrowed 50 rupees from someone. So I have to repay that 50 rupees to someone. So my net capital is just 50 rupees. Okay, net working capital is a measure of company's liquidity and its ability to meet short-term obligations as well as fund operations of the business. Liquidity का मतलब क्या होता है? Are you aware what is liquidity? Liquidity means the money which is available to you instantaneously, जिसको आप जब चाहे यूज कर सकते हैं. That is called liquidity. कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूँ. आपके पास सेविंग अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है. सो इज दैट लिक्विड और इलिक्विड? दैट इज वेरी मच लिक्विड. क्यों? आप बैंक जाएंगे, एटीएम से पैसे निकालेंगे और आपको जो काम है आप यूज करें. नाउ सपोज यू हैव वन बिल्डिंग. उस बिल्डिंग का कॉस्ट मान लीजिए कि 30 लाख रुपए. सो इज दैट योर असेट लिक्विड और इलिक्विड? सो दैट असेट इज मोस्टली इलिक्विड. क्यों? मैंने क्या बोला कि लिक्विडिटी कहने का मतलब है रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल टू यू इंस्टेंटेनियस. तो अगर आपके पास बिल्डिंग है तो क्या बिल्डिंग से आप तुरंत कुछ अपना काम कर सकते हो? कोई दूसरा काम पड़ा तो नहीं कर सकते हो. आपको बिल्डिंग को सबसे पहले बेचना होगा. बिल्डिंग को बेचने के लिए आपको लग जाएंगे कम से कम 15 डेज या 1 मंथ. तो 1 मंथ तक यू कैन नॉट यूज योर असेट फॉर अदर टास्क. सो बिल्डिंग इज एन इलिक्विड असेट. गोल्ड मोर और लेस लिक्विड थिंग कि आप गोल्ड को भी तुरंत जाकर के किसी दुकान में बेच सकते हो. योर अमाउंट इन सेविंग अकाउंट दैट इज लिक्विड. नाउ टेल मी, सपोज यू आर हैविंग अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट. इज दैट लिक्विड और इलिक्विड? सो दैट इज मोस्टली इलिक्विड, नॉट लिक्विड. आप बोलेंगे कि आप तो कभी भी एफडी को तोड़ सकते हैं. ऑफ कोर्स आप तोड़ सकते हैं, आपको पेनल्टी लगेगी और आपको कुछ पैसे कम मिलेंगे. तो इसलिए एफडी अगर आपके पास है तो दैट इज इलिक्विड. तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं व्हाट इज लिक्विडिटी, means what is liquid and what is illiquid. So net working capital is the liquidity of the company. Means company के पास instantaneously use करने के लिए जो amount पड़ा हुआ है उसको हम net working capital बोलते हैं. That is why it is the difference between current asset and current liability. Am I clear about that? आपको कैपिटल के बारे में मैंने बता दिया. कैपिटल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि कुछ कैपिटल जो है वो आप अपने पैसे से लेते हैं, कुछ कैपिटल जो है आप दूसरों के पैसे से लेते हैं. ठीक है, तो एक तरह से आपकी एक करंट, एक आपका असेट होता है, एक आपकी लायबिलिटी होती है. जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालते हैं तो उसको आप नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल. दिस इज टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी. क्लियर? This is the next question which have been asked in DGMS exam. Once more, sir. Okay, I'll explain again. Net working capital. Try to attempt this question. Net working capital refers to current assets minus current liabilities, total assets minus current liabilities, current assets minus fixed liabilities, current assets, total assets minus fixed assets. So you are answering A. And of course, the answer is A, current assets minus current liabilities. All right, यहीं पे मैं आपको I must explain you this term also. What is fixed liability या fixed asset? तो आपने अभी you just seen that there were two things. Number one was current, and number two is fixed. Now tell me, what is the difference between current and fixed? Very simple. आपके अकाउंट में जो 10,000 रुपए थे ना, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, दैट इज योर करंट असेट. लेकिन अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसको आप यूज तो कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, दैट इज योर फिक्स्ड असेट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फिक्स्ड. The thing, the resource which can be used instantaneously is current asset. The resource which will take some time to be used by you is called fixed asset. So this is the difference between current asset and fixed asset. And please remember, again, when we talk about net working capital, then this is involved, this is associated with current thing and not fixed thing. याद रखिएगा, net working capital is related to current assets and liabilities, not fixed asset and liabilities.
व्हाई? बिकॉज फिक्स असेट मैंने भी आपको बताया आपको यूज करने के लिए टाइम लगेगा. ओके, कम टू द next topic number 18, which is vision, mission, goals and strategies. So I remember that some quiz was conducted in the WhatsApp group and there was one question related to vision and mission of DGMS. So today we shall try to understand what is the vision and mission. Okay, before we read it, we just see this image. Okay, this will increase the clarity in your mind. You can see here it is written mission. You can see here it is written vision, and there is a ladder. So which is preliminary, mission or vision? It is mission. What do you want to do is your mission. Why do you want to do is your vision, and how do you want to do are your goals and objectives. तीन चीजें हैं. आप क्या करना चाहते हो? This is your mission. आप क्यों करना चाहते हो? This is your vision. आप कैसे करना चाहते हो? That is your goal and objectives. आसान है? So this is the difference between mission, goal and objective and vision. And now read the first slide. This is the first slide. A vision states what the organization aspired to become in the future. इस इमेज में आप देखो, where was vision? Vision was here. आदमी ने अभी चढ़ना स्टार्ट ही किया है, मतलब you have just started your company and vision is here. So vision is of course what? A future thing. So that is why here it is written that a vision state what the organization aspires to become in the future. इसको हम बोलते हैं क्या? Vision. What is mission? Mission मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या करना चाहते हैं. That is called mission. वही चीजें यहाँ पे explain किया हुआ है. A mission reflects the organization past and present by stating why the organization exists and what role it plays in the society. That is mission. Mission is a general statement of how you will achieve your vision. What are goals and strategies? Goals are more specific aims that organization pursue to reach their vision and mission. Goals are statement of what needs to be accomplished to implement the strategy. Strategies are a series of ways of using the mission to achieve the vision. आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. स्लाइड में भी आप पढ़ लेना और उससे बढ़िया मैंने आपको बताया कि ये इमेज अगर आप याद रखोगे, so you will always remember what is mission, what is vision and what are goals and objectives. एक और लाइन है, उसको भी थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया है. Okay, so mission statement is here, vision statement is here, strategy is here, goals are here. What is mission statement? Who we are, what we value. What is vision? What we want to become. हमेशा पता है ना, vision is a future thing. Strategies, how we will achieve our vision. Goals and objective, how we gauge our degree of success. Clear? This is the question which have been asked in UPSC, DGMS. So please read this question and answer. A future target or end result that an organization wishes to achieve is called, tell me. ऑल ऑफ द ऑप्शन इसमें कैसे हो सकता है? ये बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है. आपको भी मैंने बताया कि गोल इज डिफरेंट, मिशन इज डिफरेंट, विजन इज डिफरेंट. तो इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं हो सकता है ना? तो कभी भी एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन डोंट ट्राई टू आंसर ई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गोल इज डिफरेंट, विजन इज डिफरेंट, मिशन इज डिफरेंट, पर्पस इज डिफरेंट. Okay, lot of you people answered. अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आया. अभी पीछे हमने क्या पढ़ा ना, आप भूल जाओ. अभी हमने पीछे मिशन विजन के बारे में क्या पढ़ा, आप उसे भूल जाइए कि हमने क्या पढ़ा. अब सिंपल से इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए. क्या लिखा हुआ है? अ फ्यूचर टारगेट और एंड रिजल्ट.
ठीक है, आपको ये जानना है। बताओ, कभी आपने किसी दूसरे आदमी से कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, क्या करना चाहते हो? कभी पूछा है? अच्छा, कभी अब कभी 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 ऐसा पूछा है कि तुम्हारा मिशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? शॉर्ट टर्म लगता है। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप देखना, यू ऑलवेज यूज द वर्ड विजन। व्हाट इज योर विजन, व्हाट डू यू वांट टू डू? दैट इज व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑफ कोर्स विजन। एंड ऑफ कोर्स अब जितने लोगों ने ए आंसर दिए हैं, बी दिया है, अभी तो हमने पढ़ाया ना इधर। देखो, इससे क्लियर क्या हो सकता है, इससे क्लियर क्या हो सकता है कि जब आपने स्टेप चढ़ना स्टार्ट किया तो मिशन था, जब आपने स्टेप फिनिश किया तो विजन था। सो लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड ए, हाउ कैन ए बी द आंसर? ठीक है, तो उस इमेज को याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, टॉपिक 19 फॉर टुडे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल ही मैंने बताया था आपको, you get the salary on 31st or end of the month. Suppose you get 50,000 rupees. Now what you do? You make a budget कि हमारे इस महीने में ये खर्चे हैं, मुझे इतने पैसे को सेव करना है। बजट बनाते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, हर कंपनी अपना बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो बजट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वंस लाइफ। हमारा भी, आपका भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी गवर्नमेंट का, छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बजट सबको बनाना पड़ता है। अपने फाइनेंस को सबको मैनेज करना होता है। एवरीवन हैज टू मैनेज देयर फाइनेंस। द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, yesterday also we have discussed about this topic. Financial management is the business function that deals with investing the available financial resources in a way that greater business success and return on investment is achieved. आप अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या सोचोगे? व्हाट विल बी योर एम इन योर ओन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे सेव करूं ताकि कल को एक नया अच्छा घर खरीदूं, ताकि कल को एक अच्छी गाड़ी खरीदूं। इसी तरह की सोच होती है ना आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए अल्टीमेटली इसमें भी क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड कंपनी एक्वायर, मींस एस्पायर, दे मस्ट एस्पायर हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि भाई मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे अपनी बिजनेस से मिलने चाहिए। दिस इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड? investment decisions, working capital decisions, financial decision, dividend decision, ensure liquidity and profit management. All right. Okay. I would like to explain this word also, dividend, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन डायरेक्टली डिविडेंड के बारे में पूछा जाए। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट हो, नंबर 1 कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ, नंबर 2 उस कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। कंपनी कोई सिंगल पर्सन तो हो नहीं सकता, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है। सपोज उसमें एम्प्लॉइज है, सपोज उसके शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट अगर पीएसयू है तो गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। तो पहली चीज, कंपनी मेक्स प्रॉफिट। नंबर 2, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू इट्स स्टेक होल्डर्स टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन, एंड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। आपने सिंपल सा, जो लोग भी, if some of you are like acquainted with the share market, then you must have heard this word dividend. Coal India Limited has issued a dividend of 20 rupees, or ONGC has issued a dividend of 15 rupees. So what is dividend? Dividend is basically a share in the profit of the company for its stakeholder. अपने stakeholders को मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए या उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़े उनको रिटर्न देने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज वेरी easy picture. This person is thinking about what? Piggy bank means saving, credit card bills. Okay, पर्स में कितने पैसे रखने हैं, मोबाइल लेना है, all these different kind of things are there in financial management. Okay, so this is the question and try to attempt this question. In today's scenario, financial management is mandatory for any organization as it helps in profit maximization, maintaining cash flow, capital budgeting, shaping out dividend policies for shareholders, and all of the options.
Great. Lot of you people are answering, and most of you are answering E. So without any wastage of time, I must show you the answer is E. So once again, our strategy of choosing the option of all of these in a management questions is right. ठीक है, मैं क्या बताया था आपको कि अगर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, सपोज 10 क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, अगर आप 10 के 10 टिक करके आओगे, अल्टीमेटली आपको कुछ पॉजिटिव में मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको -1 -2 आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 10 क्वेश्चंस में यू मस्ट सिक्योर सम पॉजिटिव मार्क्स व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि यहाँ तो 0.1 0.2 भी मैटर करता है। Alright, so this is the last topic for today, forecasting technique. उसके पहले बिफोर आई रीड द स्लाइड, सबसे पहले फिर से वही चीज कि मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। ओके, फोरकास्टिंग, व्हाट इज फोरकास्टिंग? आप न्यूज देखते होंगे ना, न्यूज में वेदर फोरकास्ट कभी सुना है? वेदर फोरकास्ट बताता है, आईएमडी बताता है कि आज से 2 दिन के बाद इस जगह पे काफी बारिश होगी, या आईएमडी फोरकास्ट करता है कि 1 जून को मॉनसून जो है वो केरला के कोस्टल एरियाज में आ जाएगा। सो व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग मींस यू ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। आईएमडी मींस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी के पास कुछ सैटेलाइट्स के इमेजेस होते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा होता है, उसके आधार पे दे टेल यू कि कल यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो फोरकास्टिंग कहने का मतलब क्या है कि आप यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद द यूज ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेस। सो दिस इज सिंपल फोरकास्टिंग। सो व्हाट इज फोरकास्टिंग? द प्लानिंग फॉर मटेरियल मैनेजमेंट is aimed at determining the demand for the end products. This is possible only through foresightedness or forecasting. Therefore, forecasting forms the basis for material planning. Forecasting refers to practice of predicting what will happen in the future by taking into consideration event in the past and present. आराम से पढ़, अगर आप you read the slide and you will learn each and every word which is written here because it has been written in most easiest form. Basically, it is a decision-making tool that helps businesses cope with the impact of future uncertainty by examining historical data and trends. For example, आपको माइनिंग सेक्टर से एकदम जो अभी रिसेंट पास हुआ है उसका एग्जांपल आपको बताते हैं। During the lockdown, just after the lockdown, you must have heard that there was a coal shortage all over the world. इसके अलावा आपने सुना होगा there is a chip shortage in whole of the automobile industry, whole of the computer industry. सुना है आपने? तो when you try to predict such kind of impacts which may come in the future, you are basically using forecasting technique. ठीक है? अगर आप कोई प्रोडक्ट, if you are making some product, you will always forecast कि आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट नहीं बनाना है। क्यों? बहुत ज्यादा इफ यू ट्राई टू मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और अगर आपकी डिमांड नहीं है तो आपके प्रोडक्ट वेस्ट होंगे। क्यों वेस्ट होंगे? आपने एक तो बहुत सारा पैसा लगा दिया जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप उसको वेयर हाउस में रखोगे, उसके आपको रेंट देना पड़ेगा, आप किसी को रखोगे उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रख लो। आप बहुत कम भी नहीं बना सकते हो क्योंकि सडन डिमांड आ गई, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। सो देयर every businessman, every organization try to maintain an optimum level of products in their business. इसके लिए वो कैसे डिसाइड करेंगे कि what is the optimum level? For that people use forecasting technique. फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पास्ट बिहेवियर क्या रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मतलब कि डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, उन सारे रिसोर्सेज को यू यूज एंड यू ट्राई टू फोरकास्ट द फ्यूचर। ओके, this is the slide, read it. So all those things are included in the forecasting technique. Okay, this is somewhat little more specific, but anyways एक दो टॉपिक तो इस तरीके के आते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। Okay, so you can read the slide. Forecasting techniques in these are types of forecasting techniques: weighting average, exponential smoothing, trend analysis, correlation.
सेल फोरकास्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये सारी चीजें, कि आपकी प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह के प्रोडक्ट आपको चाहिए और प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बिल ऑफ मटेरियल, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इंक्लूड होती है फोरकास्टिंग टेक्निक में. दिस इज द क्वेश्चन which have been asked in DGMS exam. Try to read it and answer. The forecasting techniques used for material planning is oblique product requirement, trend analysis, and correlation. Options are 3, 2 and 3, 2, 1 and 3, 1. All right. So official answer is B, but I think answer for this question will be all of these: product requirement, trend analysis, and correlation. ये तीनों ही इसके आंसर होंगे, बट ऑफिशियल की में 2 and 3 दिया हुआ है. तो अगर इस तरह क्वेश्चंस आपके पास आ गए तो आप क्या करोगे? 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको ऐसे पेपर में मिलेंगे. ओके, ट्राई टू लिसन अबाउट दिस. According to me, the answer for this question should be all of these 1, 2, and 3. But in the paper, 1, 2, and 3 option was not given. So अगर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें टिक करना होगा तो फिर आप सिंगल वाले को तो हटा ही दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो. सो ईदर यू विल चूज बी और यू विल चूज डी. ओके, नाउ दिस इज योर लक. इफ यू चूज बी you will be right. If you choose D, you will be wrong. But as per me, answer for this question should be 1, 2, and 3. But anyways, these are the hazards which are present, so we cannot do much about it. There is one more question which have been asked regarding forecasting only. This is again the DGMS question. The process of forecasting is based on past performance, future trend, current analysis, environmental conditions, all of the options. अब इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आता ना जवाब, आप ई टिक कर लो. Okay, if you don't know the answer, tick simply E, which is the right answer. Official की. Okay, यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है. ये इन्वायरमेंटल कंडीशन एज सच डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट चूंकि अब यहाँ पे ए बी सी डी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो यहाँ तो ऑल ऑफ दीज ही टिक करेंगे इसमें. तो अगर आप लक भी, मतलब बेसिकली थोड़ा सा लक हो गया, बट एनीवेज ये लक तो फिर भी 100% श्योर शॉट सही बैठा. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई. इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, बट क्या है कि जब आंसर ई अवेलेबल है तो ऑफकोर्स ई टिक करने में कोई प्रॉब्लम है. तो फिर से मैंने आपको दिखा दिया, फॉर द मैनेजमेंट क्वेश्चन इफ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज अवेलेबल, आपको नहीं आता क्वेश्चन, आप टिक करके आ जाओ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स आपको पॉजिटिव में ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे. अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो शायद फ्री वाले क्लास में नहीं होगा. तो ये मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाई थी, अर्ली बर्ड ऑफर टेस्ट सीरीज के लिए और जितनी भी सारी चीजें चल रही है उनके लिए अवेलेबल है. तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एक मैं व्हाट्सएप का अभी लिंक ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, अभी आप लीव करके मत जाइए. मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, तो जो भी लोग अपने ऑनलाइन माइनिंग एग्जाम के ग्रुप में नहीं है उनको ये लिंक ज्वाइन करना है. प्लीज जो लोग ग्रुप में है वो ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि फिर फालतू में क्या होता है, ये ग्रुप बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं. ठीक है, so I am sharing the link in the chat box. Okay, देखिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है. So you can simply click on this link and join the group where I will share the PPT of this presentation. और कल वाला भी मैं शेयर कर दूंगा. ओके, सो आप इस ग्रुप को इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चन भी बता देंगे. बट एनीवेज, अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आपको ज्वाइन करना चाहिए. लिटरली आपको बेनिफिट होगा. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, वन शॉट एंड परफेक्ट शॉट, दैट्स इट. एक ही काम को बार बार करने में कोई मजा नहीं होता है, आपको कोई फायदा नहीं होता है. तो यू शुड ट्राई टू complete it in one attempt. Okay, like this, I'll try to discuss the questions from Mines Act, Mines Rule, General Safety, all those things. But I think 1-2 lectures will be free for everyone.
Other than that, we shall try to give it for all of our subscribed users. Okay, thanks a lot. Let's go and enjoy the match for today, India and Pakistan, and hopefully India will win again. Thanks a lot.